very good evening to all of you. On behalf of TCS Ion, I, Meenal, who leads the industry partnership, welcome you all to a very interesting topic of the day, electronic vehicle and the future job market. And today's topic, electronic vehicle, we all have been hearing about it. There is a very big buzz in the market about it. So I think today is a time to understand from the expert, a very eminent speaker we have for today's session, Mr. Vivek. And I think we all are lucky to have him for today's session to understand directly from him is whatever is the buzz which is being created, is it true? And if we have to ride on the bus, how we can do it. And before we start with our questions, I will like to introduce Mr. Vivek. Mr. Vivek is a co-founder of Flekz AutoTech Private Limited. He is into electronic mobility space, providing the technical and business consulting services to MNC and Tier 1 companies. He has 32 years of industry experience. He has worked with leading automobile companies as well as the OEMs like Tata Motors and General Motors. He has successfully delivered multiple programs across passenger and commercial vehicle segments. He has worked across value chain right from the production to program management and to product marketing. So we are very lucky to have him amongst us, to directly learn from him about this particular topic. A very warm welcome, sir. I am very excited to hear from Mr. Vivek. What are these emerging trends we are talking about in the automobile sector? And everywhere we are talking about the electronic vehicles. What is this is going to, bring us? What is the future of the electronic vehicles? I'm very keen and curious to know this. Thank you, Meenal. And good afternoon, everyone. So, as Meenal has rightly explained, the automotive industry is undergoing huge amount of disruption. It's not a change, it's a disruption. And what I would like to say is evolution of technology in other industries is having an impact on automotive industry. So let me take case of two industries. First is chemical industry. Now, chemical industry, for example, has been working on lightweighting of materials. What is lightweighting is essentially getting the same strength as steel by using an alternate material, maybe plastic. And the idea is that by doing so, you are able to reduce weight of the car. The lesser weight of the car you carry, the more efficient the car is, the lesser the emissions are. So today's top-end luxury cars and Formula 1 cars use a lot of carbon fibers. Another example is composites. Composite materials are used in every car. Plus, there are thermoplastics as they call it. So wherever we could not think of using plastic because of the heat that is generated while running the automobile, thermoplastics have been developed by the chemical industry, and it is helping save on weight for the automotive industry. The most notable invention of chemical or contribution of chemical industry is the invention of lithium batteries, right? So, it has suddenly changed the dynamics of the automotive industry. In fact, the initial years of automotive world, vehicles were running on battery electric vehicles, but soon petrol took over because of huge advantages in terms of convenience, and suddenly batteries took a backstage. Around 10 to 20 years ago, application of lithium in automotive world ensured that instead of your lead acid batteries, which are very heavy and which need frequent charging, you are having lighter and denser lithium ion batteries. So I will give you an example. If you look at, say, Tata Nexon EV Max, which is having a range of around 437 kilometers. So what it means is when you top up your car battery by charging, then you can move from cities like Pune to Mumbai. The distance is from here, from heart of Pune to, let's say, gateway of India.
The distance is around 180 kilometers. So I can go from here to Gateway of India and come back without worrying about the charging of my car somewhere in Lonavala, Khandala. That's not required. I mean, that kind of progress has happened thanks to chemical industry. Another thing is another industry that has contributed is IT and electronics industries. So if you look at mobile phone, and if you look at your central console or infotainment system in your car, what is that infotainment system? Infotainment system is nothing but highly evolved mobile phone. I mean, with mobile phone, you are able to carry your world with you in your pocket, and same kind of technology is sitting inside a car. Then we also received sensors and radars from the electronics industry, which is helping us give a lot of advanced technology to the world. Now, power electronics has become a game changer for electric motors. For example, the motors are in existence for more than 200 years, but their ability to control the motor for the traction purpose, that is for the automotive industry, that was not, that technology was not that matured. So as a result, with the evolution of electronics and semiconductor industry, even we are able to control motors the way we want it to behave, in terms of acceleration, in terms of overtaking, in terms of braking, you name it, whatever your mind thinks, the motor delivers. And that is because the evolution of electronics, power electronics, and which has been adopted by the automotive industry. So likewise, automotive industry has used innovation in other industries, not only chemical and IT and electronics, even many other industries, and is able to deliver products which are technologically superior. Now, if I sort of summarize the kind of disruption that is happening in the automotive world, it can be summarized in a single word called PACES, PACES, where P stands for pollution, A stands for autonomous, that is driverless, C stands for connected, E stands for electric, and S stands for shared mobility. So let us understand them one by one. I mean, these are called mega trends because it is affecting our life, and we are seeing a huge change in the way we move from point A to point B. So if I talk about pollution, now awareness about environment, the CO2 emissions has gone up significantly across all the people on the planet, and governments of the world are bringing in stricter regulations day by day to ensure that the pollution is reduced and ultimately we reach net zero emissions. So this pollution is having an impact on automotive industry. The second change that I'm talking about is autonomous. What is autonomous? Autonomous is driverless cars. I mean, what we were sort of looking at in sci-fi movies is actually happening today. In the state of Arizona in the US, pilots of autonomous car, driverless cars are happening. Many OEMs, many new tech startups, they are running their vehicles and moving people from point A to point B. So the trials are ongoing. So this is where the industry will move ultimately. In at least some parts of the world, that will happen. The third change that I am talking about is connected. Now, what is connected? Connected is, in fact, if I talk about India, two brands are advertising their cars as Internet Inside. One is MG Motors and second is Kia Motors. They are not selling cars. What they are selling you is a technology. In fact, there are around 60-65 connectivity features available in many cars. I mean, not only MG and Kia, but all other OEMs are also offering connectivity features. So what you can do with these connectivity features is I will give you a couple of examples. There is an app associated with your car. By clicking a button on the mobile app,
You can start your engine remotely. In places like Delhi, suppose your office is on the 10th floor of the building and the temperature outside in summer is 45 or 48 degrees Celsius, then sitting inside your office before you leave your desk, you can switch on the AC of the car just by touching your mobile phone. That is what is possible. Then you can also get preemptive alerts, maintenance alerts. Your car needs servicing in next 1 week or next 10 days, whatever. These are nothing but connectivity features. The fourth thing is electric, which is the topic of today. There are three prominent four-wheelers in India. First is Tata Nexon EV, second is Hyundai Kona Electric, and third is MG ZS Electric. So these cars are already running on roads, and I do see many people driving these cars on the roads of Pune, where I am talking from right now. The fourth change is S, shared mobility. What is shared mobility? Shared mobility is nothing but Ola and Uber of the world. In an ideal world, you need not own a car, but you can still move from point A to point B. Just use the app, order the car, the driver will come to your doorstep and take you to wherever you want. So these are the 5 mega trends: paces, pollution, autonomous, connected, electric, and shared. So these are the changes that are happening in the world, and automotive companies everywhere are moving towards it. A very good acronym given, PACES. So dear all students, please note down it. I think this will be very helpful to all of us. So Mr. Vivek, with this, I am very curious to know, now you have talked about all these 5 direction where we are moving. Now in these each direction, what are the upcoming job roles? The key job role if I have to talk about. And then my next point will be the skill and the competency needed in order to perform these job roles. And as a student, if I have to aspire to do this, how should I prepare myself for this? Sure. So to answer this, I think I need to give you some context, because the situation is complex and the answer is not easy. But let me try and help understand what is happening. So I will talk about 2 things again. First is how Indian auto industry is moving because of this so many mega trends that are happening, so many technological changes that are happening. And second is what is the technology content in the car. And once we get to understand these 2 things, then I will explain what are the relevant skills and competencies that are required for the students to enter into the automotive industry. So if you look at India as a country, we are importing oil today. How much money we are spending per year, We are spending $120 billion. What is $120 billion? It means 9 lakh crores. That's a huge number. So what is 9 lakh crore? What can we do in 9 lakh crore rupees? To give you an analogy, using that money, we can go from Earth to Moon and come back 160 times in a single year. That is the kind of money India is spending on importing oil. So suppose India wants to move to electric vehicles. So what we need to do is, electric vehicles run on batteries run on lithium. So is India having sufficient lithium reserves? The answer is no. So what India will do? It will have to import lithium. So as a country, what is the benefit I am getting? Today I am importing oil, tomorrow I will be importing lithium. So same amount of money I am going to spend. So what I feel that because of this, India will have some different combination compared to the rest of the world. We will have mix of petrol,
diesel, CNG, hybrids, and electrics. All things will coexist, and maybe after things sort of mature, because today we are living in a very sort of flux situation, it will take some direction, and then we can say with more confidence that what will be the electric vehicle content in Indian automotive industry. So to give you an example, if I talk about CNG, in the last financial year, the share of CNG vehicles has gone up significantly. It rose from around 4.5% to almost 10%. So almost it is more than doubled actually in the last 1 year compared to the previous year. So CNG is now taking, customers are interested in CNG vehicles. Then if I look at electric three-wheelers, if you look at the sale of electric three-wheelers in the month of May, the number of electric three-wheelers that are sold in India has significantly outsmarted the petrol diesel three-wheelers. So even electric three-wheelers are coming into place. So with this background, let us imagine there are again two sub-scenarios. First scenario is all vehicles become electric all of a sudden, meaning maybe whenever we switch over to electric, it will be 100% electric. And more practical is there will still be some petrol diesel cars and some hybrids and some electrics. So let me talk about scenario 1. In scenario 1, where I'm talking about that all the cars will be electric, so let us understand what kind of changes that are required when your car moves from petrol or diesel to electric. So what goes out is your engine, then your radiator, the petrol tank, the gearbox, the piping, the fuel lines. These and associated systems will go away. And what comes in? What comes in is a battery. Then batteries are high voltage systems, so you need high voltage wiring. Then you will need motor. You will need controller to take care of the motor. You will need a charger. Since you are putting in AC or DC, you will need DC-DC converter, AC-DC converter to the car. And you will also need battery management system and a thermal management system. So why thermal management system is important? So if you look at the temperature of the country all through the years from let's say January to December, so in winters we are having temperatures going below 0 degrees Celsius. In the Himalayan region, Leh Ladakh, you will find sub-zero temperatures. In summers, we are talking about heat waves, 45 degrees, 47 degrees, 48 degrees. And the lithium chemistry likes to work around 24 degrees Celsius, ambient temperature as we call it. Anything below and above, of course there is a range, but any extreme, then it doesn't give the optimum performance. So what it means is you need to manage the temperature of the battery with a thermal management system, which is very, very important in India. So this is what will happen when you move from petrol diesel to 100% electric. Okay, now let us talk about second scenario, wherein you are having hybrid cars. So what is hybrid car? Is you continue to have your petrol engine, your existing car as it is. In addition to that, you are adding a small battery and you are adding a small motor. So previously your car was running only on one fuel, say petrol. Now it will also run on battery. And in fact, last month itself, Honda Cars has launched one Honda City Hybrid. So what is that vehicle? In a very simplistic language, that vehicle has a computer that decides when to switch between petrol and electric mode. It determines depending on the driving conditions of that particular, let's say, driver. So these hybrid vehicles will have, in addition to your petrol engine, it will also have the motor and battery.
Another OEM that is doing this is Maruti. The Nexa showroom cars, Baleno, etc., they are using smart hybrid technology. So now in scenario 1, we spoke about cars running on only electric. In scenario 2, we are talking about hybrids. Now the point is, no matter what is your propulsion system, on which fuel your vehicle runs, there are certain things that are common. And I spoke about adaptation of technology from other industries, and this is what I will talk about. So in addition to your normal petrol and diesel and electric, what you have in the car, because of the safety regulations, you are having airbags, you are having ABS, you are having advanced driver assist system called ADAS, which is got cruise control. I mean, you set speed of the car, you are moving from say Delhi to Chandigarh, and you set the speed of the car at 120 kmph. The car will continue to run at 120 kmph, and suppose the car in front of you has reduced its speed, your car will also automatically reduce its speed. So that is cruise control. Then another is lane departure warning. So what is lane departure? When you move on highways, there are two white lines you see, and ideally we are supposed to drive between these two lines. So this, if you move to the right or left, the car will give you signal. Then we also know that when we take our car in the reverse gear, we see the image of from the rear of the car on the infotainment system. So that is only one camera we are talking about. But today's cars, many OEMs are offering 360-degree camera. So sitting inside in your driver's seat, you get to know the entire periphery of your car, because there are so many cameras that give you the view sitting inside. So as we can see that today's cars is actually computers on wheel. So many, it's a very complex sort of technology. And if I talk about, let's say, software code inside the car, do you know how many lines of codes are there? An aeroplane, which is supposed to be, which is a very technologically advanced mode of transport, has around 1.5 crore lines of codes. Whereas today's cars are having around 10 crore lines of code. Almost 6 to 7 times more than what you have in an aircraft. So now that we understand the complexity, so let me give you an example. So the question, you understand, I talked about the context, Indian context, that what kind of fuel will dominate India. We talked about technology, we talked about existence of multiple fuels, petrol, diesel, electric, CNG, and complete electric vehicles. So the question that I want to ask is, can a roadside mechanic repair your car? The answer is no. Because the skills that he has got are required to be upgraded to the next level. So let me give you one more example that we do ask of wheel alignment and balancing. So people have a habit of carrying out wheel alignment while servicing. Some people do it every 5,000 kilometers. Some do it every 10,000 kilometers. Some people do it after a long drive. So when you do this wheel alignment in today's car, actually indirectly you are also affecting the calibration, as they call it, of the advanced driver assist system. So let me take example of this lane departure warning system. What you do is, when you do the alignment of wheels, the front wheels, your steering wheel also moves. Now the lane departure warning system, which is part of the ADAS, advanced driver assist systems, it has got two components. One is steering angle sensors,
and another is a camera which is mounted on the inside rear view mirror of the car. What this camera does is it captures the image of the two white lines between which you are supposed to drive your vehicle, and the steering, it also uses the input from the steering wheel. Now suppose you do the wheel alignment and your steering wheel position normally is like this, it is slightly tilted, and once you start driving the car, the camera of the car is tracking the two lines, white lines on the road, and it is seeing that the steering angle sensor is saying that the car is taking the left. So what it will do is it will give you a false alarm. So only input it has got is the camera and the steering angle sensors. You sitting in a driver's seat, you are knowing that you are driving your car within those two lines, but the system thinks you are taking a left turn if your wheel is left aligned. So what it will do is it will send continuous signals that you need to sort of update your driving position because you are moving. This is the lane, left side lane, you are entering here. So it will try to correct your wheel position, and it may lead to safety hazard. So today's mechanic needs to understand that if he touches one part of the car, one system of the car, it will have an impact on other system also. So that knowledge about how today's car works is very important. Another So, Mr. example. Vivek, before we move on to the another example, I have one question, and I will ask in Hindi because we have been a lot of users who are asking that if we can ask the questions in Hindi. So I just want to know, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि right now जैसे जो हमारे मैकेनिक हैं जो कि अभी तक एक ट्रेडिशनल जॉब पे ट्रेन थे, they have seen वो इंजन वाली कार, they have seen now with this electronic vehicle coming in, what are the opportunities for these, मतलब इन इस सेगमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अपने आप को किस तरीके से तैयार करें और कहाँ से शुरुआत करें ताकि they should know that this is what I need to do. हमें इस रिक्वायरमेंट के लिए ये चीजें हैं जो हमें we have to get ready for it. And this is I'm talking about 10th and 12th ITI students. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हम अलग से we will look at it. But स्पेशली जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं, अगर उनको अपने आप को तैयार करना है इन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डोमेन के लिए, तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो पहले मैंने एग्जांपल दिया कि ये सिर्फ व्हील अलाइनमेंट का नॉलेज है आपके पास, उतना सफिशिएंट नहीं है, आपको और थोड़ा जानकारी भी चाहिए गाड़ी में ये सिस्टम किसी और सिस्टम को तकलीफ देगा क्या, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल के जरिए बताना चाहता हूँ कि क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो समझो आपके पास एक कस्टमर आया, आप एक डीलरशिप में काम कर रहे हो जो इलेक्ट्रिक कार का डीलरशिप है, और कस्टमर आपको कंप्लेंट कर रहा है कि कंपनी ने तो एडवर्टाइजमेंट किया है कि 300 किलोमीटर गाड़ी चलेगा एक बार चार्ज करने के बाद, लेकिन मेरा गाड़ी तो सिर्फ 250 किलोमीटर देता है, और सिर्फ एक दफ़ा दिया तो समझ सकता हूँ कि मेरा शायद कुछ तो चार्जिंग बराबर हुआ नहीं, लेकिन पिछले 10 दफ़ा यही प्रॉब्लम आ रही है। तो आप मैकेनिक हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम? इस सॉल्व करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ इस आपको ये समझना ज़रूरी है कि गाड़ी का सिस्टम कैसा काम करता है। बैटरी की बात करूँ मैं, तो बैटरी टाटा नेक्सॉन का एग्जांपल लूँ तो एक 320 वोल्ट का बैटरी है उनके पास। यदि मैं हुंडई कोना इलेक्ट्रिक गाड़ी का बात करूँ तो उसका 356 वोल्ट का सिस्टम है, और टेस्ला विच इज़ सपोज टू बी द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, उसकी बात करूँ तो 450 वोल्ट का सिस्टम है। तो ये इतने वोल्ट का सिस्टम है। अभी अपना घर में हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ये तो 220 वोल्ट का है, 230 वोल्ट का है, उसमें भी हमको झटका लगता है, ये तो हम उससे ज़्यादा वोल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सेफ्टी रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। तो एक मैकेनिक के तौर पर मुझे ये समझना ज़रूरी है कि ये हाई वोल्टेज सिस्टम कैसा होता है। तो समझो ये कस्टमर गाड़ी लेके आया, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका, वो कंप्लेंट कर रहा है 300 के बजाय मुझे 250 मिल रहा है, क्या करूँ मैं? उसको बाकी कुछ समझ नहीं है, क्योंकि उसका पेट्रोल के गाड़ी का अनुभव है, पेट्रोल फिल करने के बाद जितना किलोमीटर जाता है उतना जाता ही है, इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो समझो आपके पास टेस्ला का कस्टमर आया
तो टेस्ला गाड़ी में 7,000 सेल्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं, और किसी एक सेल के कारण रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो कैसे ठीक करोगे आप? आई मीन मल्टीमीटर लेके तो हर एक सेल तो चेक नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको एक ही गाड़ी पे काम नहीं करना है। आपके गराज में 10 गाड़ी है, 20 गाड़ियाँ है, और सभी कस्टमर आपकी जान ले रहे हैं कि आज शाम को मुझे डिलीवरी चाहिए। तो इसलिए आपको क्या मालूम होना ज़रूरी है, आपके पास एक डायग्नोस्टिक किट बोलते हैं इसको, एक मतलब साधारण भाषा में कंप्यूटर बोलेंगे उसको। कंप्यूटर आपके कार की कंप्यूटर को जोड़ना है, और कार का कंप्यूटर आपको सिग्नल देगा आपके स्क्रीन पर कि जो 7,000 सेल्स है गाड़ी में वो 7,000 सेल्स, इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं, कि 400-500 सेल्स का एक मॉड्यूल होता है उदाहरण के तौर पर। तो ऐसे 16 मॉड्यूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ला गाड़ी में। तो ये बताएगा कि ये 16 जो मॉड्यूल्स है, 16 में से मॉड्यूल नंबर 3 जो है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसने जो पावर देनी है वो पावर मिल नहीं रही आपको। तो क्या करोगे आप? वो आपके कंप्यूटर के ज़रिए आप वो मॉड्यूल में जाएंगे, तो मॉड्यूल में बताएगा कि सेल नंबर 178 जो है ना, वो फॉल्टी है, वो काम नहीं कर रहा। वो सेल के कारण आपका मॉड्यूल काम नहीं कर रहा, और वो मॉड्यूल काम नहीं कर रहा इसलिए आपको रेंज नहीं मिल रहा। तो यदि आपके पास ये थोड़ा नॉलेज नहीं है डायग्नोस्टिक स्किल का, मतलब डायग्नोस्टिक टूल यूज करने का, तो आप वो गाड़ी ठीक नहीं कर पाओगे। So that means, Mr. Vivek, is it you should know how to operate that diagnostic system which we are calling the computer? So Correct. do you need computer engineers or understanding of what exactly at a skill level, how these, those who have no knowledge actually, specifically on the computer science, वो how they can do it? वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है। ये तो अभी सभी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट बहुत बढ़ गया है, तो ये इसका नॉलेज मतलब इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जो देते हैं ये। आज भी किसी कंपनी के डीलरशिप में आप जाओगी तो आपको दिखेगा कि वो डायग्नोस्टिक टूल्स यूज़ करते हैं। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन वो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो सीखे नहीं आप, तो आप कार ठीक नहीं कर पाओगे। और दूसरा क्या है कि अभी एक बैटरी का एग्जांपल लेता हूँ, तो एक तो हाई वोल्टेज सिस्टम है, तो हाई वोल्टेज सिस्टम का तो जो भी आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे काम करना चाहता है, हाई वोल्टेज सिस्टम समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं समझेगा तो इट इज़ अ सेफ्टी रिस्क, मतलब ज़िंदगी के साथ आदमी खेल रहा है। तो अभी ये हाई वोल्टेज सिस्टम को पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, उसके कोर्सेज भी अवेलेबल है। और ये सिस्टम समझो, आप वो कस्टमर का जो एग्जांपल दे रहा था मैं कि 300 के बजाय 250 मिल रहा है, तो पहली चीज़ आपको ये करना है कि वो बैटरी पूरी कार से सेपरेट करनी है। तो हाई वोल्टेज सिस्टम को डिसेबल करना बोलते हैं उसमें। फिर आपको और क्या जानकारी चाहिए? आपको सेल मालूम चाहिए कि गाड़ी में सेल्स कौन सा है, कौन से टाइप का है, सिलेंड्रिकल है, पाउच सेल है, प्रिज्मेटिक है, वो सेल का करंट रेटिंग कितना है, वोल्टेज रेटिंग कितना है, रेजिस्टेंस वैल्यूज़ क्या है, वो बैटरी में टेम्परेचर सेंसर्स क्या है, कितने हैं, कहाँ पे लगाया है। क्योंकि मैंने अभी इंडिया का एग्जांपल दिया कि हिमालय में -0 जाता है और इधर राजस्थान में 45-50 डिग्री तक के जाता है, तो उसके लिए टेम्परेचर सेंसर बैटरी में होते हैं जो बाहर का टेम्परेचर सेंस करके आपका बैटरी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। सो ये जानकारी ये टेक्नीशियन को होना ज़रूरी है। बाद में वो सेल्स कैसे अरेंज किए हैं, क्योंकि उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जो है वो समझ पाएंगे इमीडिएटली। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस कैसा किया है। अभी हर गाड़ी का में जो बैटरी यूज़ किया जाता है वो लिथियम का ही होता है, लेकिन उसमें भी लिथियम के बहुत सारे केमिस्ट्रीज होते हैं। लिथियम आयन फॉस्फेट, देन NMC, निकेल मैंगनीज कोबाल्ट, NNC के भी बहुत सारे वैरायट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, इनका जानकारी होना ज़रूरी है। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर। समझो आप इलेक्ट्रिक मोटर असेंबली के प्लांट पे काम कर रहे हो, तो क्या बेसिक चीज़ें मालूम चाहिए आपको कि अभी इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है। एक स्टेटर होता है जो स्टेशनरी होता है, घूमता नहीं है। एक रोटर होता है जो घूमता है। मैग्नेट्स होते हैं,
कॉपर वाइंडिंग होता है, वो कॉपर वाइंडिंग सेपरेट करने के लिए आपके पास इंसुलेटर होता है। तो इसका असेंबली कैसे करते हैं? यदि ये मैनुअल ऑपरेशन है, मतलब बहुत छोटा वाला फैक्ट्री है तो मैनुअल ऑपरेशन रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट्री धंधा अच्छा होने के बाद वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगाएगा। तो ये वाइंडिंग कैसे करने का, इसमें इंसुलेशन कैसा इंसर्ट करने का, उसमें जो लैमिनेशंस बोलते हैं वो लैमिनेशन चिपकाने का कैसे, और ये सब करके जो मोटर बनती है। अभी आपको स्टेटर मतलब मोटर का जो केसिंग होता है वो रोटर पे डालना है, तो उसको हीट करना पड़ता है। तो हीटिंग कितना टेम्परेचर पे करना चाहिए, क्योंकि पूरा वो उसका आउटर डायमीटर जो होता है, इनर डायमीटर रोटर से ज़्यादा होने के बाद ही वो रोटर अंदर जा पाएगा, क्योंकि उसमें एयर गैप का बहुत बड़ा महत्व है, नहीं तो मोटर बराबर आपको परफॉर्मेंस देगी नहीं। तो ये जानकारी होना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपने मोटर तो असेंबल कर दी, लेकिन मोटर का जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि उसका कितने आरपीएम पे घूमना चाहिए, उसमें का कितना टॉर्क मिलना चाहिए, कितना शक्ति मिलना चाहिए, तो उसका एक डायनामोमीटर टेस्टिंग होता है। तो वो मशीन भी आपको ऑपरेट करते आना चाहिए। और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, मतलब शुरू में सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आपको आदत हो जाएगी इसकी। और मतलब लिटरली आंखें मूंद करके भी आप कर सकते हो काम, एक बार आपको उस पर कंट्रोल आ जाने के बाद। सो ये चीज़ें जो है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने व्हील अलाइनमेंट का एग्जांपल दिया आपको, तो व्हील अलाइनमेंट में आपको क्या चाहिए, मैकेनिकल नॉलेज चाहिए कि गाड़ी का व्हील्स कैसे एडजस्ट करने का, और थोड़ा सा व्हील अलाइनमेंट का महत्व भी मालूम चाहिए आपको कि ये क्यों करना पड़ता है। नहीं तो टायर आपका एक साइड में ज़्यादा वियर हो जाता है, तो गाड़ी एक साइड पकड़ लेती है, राइट में जाएगी या लेफ्ट में जाएगी, तो टायर रोटेट भी करना पड़ता है, व्हील अलाइनमेंट करना पड़ता है। और जो फॉर एग्जांपल कार्गो व्हीकल्स होते हैं, थ्री व्हीलर, जहाँ पे कुछ आप समझो कुछ फ्रिज वगैरह कुछ लेके जा रहे हैं, तो उसके वेट के कारण भी उसका अलाइनमेंट चेंज होता है। तो ये मैकेनिकल मालूमात आपको चाहिए। और दूसरा क्या है कि मैं अभी जो एग्जांपल दिया मैंने कि व्हील अलाइनमेंट से आपका लेन डिपार्चर वार्निंग वाला जो सिस्टम है, एडवांस ड्राइवर सिस्टम, उस पर भी इम्पैक्ट होता है। तो वो सिस्टम मैं जो काम करता हूँ मैकेनिकल का, तो मेरे काम के कारण दूसरा सिस्टम पे इम्पैक्ट क्या होता है ये भी मुझे मालूमात चाहिए। बैटरी का एग्जांपल दिया, उसमें तो मैकेनिकल है क्योंकि आपको बैटरी निकालनी है। इलेक्ट्रिकल का नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाई वोल्टेज सिस्टम के साथ आप डील कर रहे हो, वो सेपरेट कैसे करना है। बाद में थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी नॉलेज, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 10वीं 12वीं में जो पढ़ते हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपको इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, लेकिन ये थोड़ा सा नॉलेज रहेगा कि कौन सा केमिस्ट्री गाड़ी में यूज़ किया है, तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, करंट कितना आता है वो पर्टिकुलर बैटरी टाइप का, ये मालूमात थोड़ा ज़रूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी तो सबको ज़रूरी है। मोटर का एग्जांपल दिया मैंने, तो मैकेनिकल का नॉलेज है क्योंकि आप असेंबली करते हो, और इलेक्ट्रिकल क्योंकि उसका आउटपुट जो है, आप मोटर को करंट देते हो, मोटर रोटेट होती है और फिर आप पहिए घुमाते हो उसके कारण। तो ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो गया। लेकिन ये सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए। ये क्यों चाहिए, मैं और एग्जांपल देता हूँ। सबके घर में अभी मिक्सर होता है, उसमें भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। सबके घर में ओवन होता है, ओवन में यूज़ किया जाता है, वॉशिंग मशीन में यूज़ किया जाता है। बाद में जो घरों में इन्वर्टर होता है, लाइट जाने के बाद बिजली जो आती है, उसमें बहुत सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इवन बाथरूम में जो हम गीज़र यूज़ करते हैं उसमें भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। तो थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि मतलब कुछ माइनर प्रॉब्लम रहेगा तो आप ठीक कर पाओगे। ये सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिस्टम का पूरा नॉलेज तो ज़रूरी है, और थोड़ा रिपेयर आपको करते हैं। सो आई थिंक these are the skills I would say that today's technician should. Vivek, I just want to understand, अगर if I am a 12th pass, so आपने ये जो चार main domain जो mention किए, right from the battery, mechanical, electronics,
12th के बच्चों को इतना नहीं उतनी नॉलेज होती है, या बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नॉलेज होती है, सर्किट की नॉलेज होती है। सो अगर मैं वहां पे आई एम राइट नाउ, तो मैं ये चीजें और कैसे सीख सकती हूँ, कहाँ सीख सकती हूँ, हाउ आई कैन प्लान दिस सो दैट एटलीस्ट आई स्टार्ट। तो ये चीज़ें तो अभी मतलब ये ऑटोमोबाइल तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें डरने वाली बात कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ी ढंग से ठीक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है ये। तो मतलब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन कठिन तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे बोलूँगा मैं। और इसके बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे ये चीज़ें आप सीख सकते हो। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, विच दे आर आस्किंग एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है क्या इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में? मतलब अगर कोई भी खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहे, ऑल्दो ये बहुत टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होते जा रहे हैं, वी हैव लॉट ऑफ कंप्यूटर्स, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी की गेटिंग इन्वॉल्व इनटू इट, बट फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट खुद से कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी इन दिस सेगमेंट? अ लॉट, मतलब स्काई इज द लिमिट। आप क्या करना चाहते हो वो पहले ठान लो। तो अभी 2-3 उदाहरण देता हूँ मैं आपको। तो पहला उदाहरण है चार्जिंग स्टेशन। अभी हम समझो पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल पंप के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी चलानी है, ठीक है, आप घर में चार्ज कर सकते हो। लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, पूना से मुंबई जाना है, और बीच में आपको चार्जिंग करना पड़ेगा, तो क्या लगेगा आपको? चार्जिंग स्टेशन, बराबर। तो ये चार्जिंग स्टेशन भी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बाद में यदि किसी कंपनी को इंस्टॉलेशन करना है चार्जिंग स्टेशन, तो वो इंस्टॉलेशन भी आप सीख सकते हो। दूसरा चीज़, यानी अभी गराज का मैंने बात किया है, डीलरशिप का बात किया, तो आपको मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी आप ठीक कर सकते हो क्या? इसके लिए आपको मालूमात चाहिए कि अभी 3 गाड़ियों का जो मैंने एग्जांपल दिया, टाटा नेक्सॉन ईवी, MG ZS EV एंड हुंडई कोना, तो ये गाड़ी के बारे में आपको कितना मालूमात है? इसमें बैटरी कौन सी यूज़ करी है, मोटर कौन सी यूज़ करी है, कितने वोल्ट का सिस्टम है, और ये तीनों गाड़ी आपके पास आगे गैराज में, तो आप ठीक कर पाओगे क्या? तो वो मतलब जो भी गाड़ी मार्केट में आती है, आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, बैटरी का केमिस्ट्री क्या यूज़ किया है, मोटर का क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है जनरली। क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई भी लेके आओ आप, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, लेकिन उसका हल भी होता है, बराबर। वो हल भी आप कर पाओगे क्या? ज़रूर कर पाओगे, लेकिन यदि आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है और उसके पहले कि ये टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ किया है, और वो ये। और एक एग्जांपल देता हूँ कि ये गाड़ियों का या जो सिस्टम्स होती है, मोटर बोलो, बैटरी बोलो, इनका टेस्टिंग भी बहुत करना पड़ता है। 30-40 प्रकार के टेस्ट होते हैं, वोल्टेज टेस्ट, करंट टेस्ट, टॉर्क टेस्ट, पावर टेस्ट, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कितना है, वगैरह वगैरह। तो आप टेस्ट लैब भी डाल सकते हो। तो जो भी कंपनियां मोटर या बैटरी बना रही है, उनका टेस्टिंग आप कर सकते हो। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आने वाला है, क्योंकि ये बैटरी का लाइफ होता है 8 साल, उसके बाद आप ये गाड़ी में लगाते नहीं हो, कहीं दूसरी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, और गाड़ी में नया बैटरी आएगा। तो जो बैटरी गाड़ी से निकाला जाता है, या बीच में ही 2-3 साल के बाद समझो ख़राब हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसका रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और रिसाइकलिंग जो होता है कि गाड़ी मतलब बैटरी के जो भी पार्ट्स होते हैं, आपको अलग अलग करते आना चाहिए। अलग करने के बाद इसका डिस्पोजल, कुछ पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, कुछ पार्ट आपको डिस्पोज करना पड़ता है। तो ये भी अगले 3-4 साल में बहुत बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि अभी इंडिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है उनका 8 साल कंप्लीट हुआ नहीं है, उसके बाद ही अपने को पता चलेगा। लेकिन ज़रूरी ये रिसाइकलिंग का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, ये भी सीख सकते हो आप। तो ऐसा बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी है।
I think a very interesting, बहुत कुछ सीखने को मिला. I think at least I and all my audience should agree to it, to listen to us. Thank you. Thank you so much.